Hello everyone, today I am at Surla Tahrir and you are looking at Dargah which is lying on the bank of Madai river, and the speciality is Hindu-Muslim unity. The Shigmo from Siddheshwar temple comes to this Dargah and they play here Shigmo festival every year after the Holi, and they offer prayer to this Dargah. Then the Dargah people, Muslim, the Maulavi, they pray for the health of all these people and for the betterment of these people, and then this Shigmo people will go back to their place. So every year this is happening, and this is the third example I am giving you of Hindu-Muslim unity in Goa. One is Arabo Pedne, you can watch my YouTube. Then other is Ganjain, Shantadurga temple, and here at Tahrir, Surla, while coming to this Dargah, these people say the lines, Ami jau piracha bhete re, pir bhetla ardya vate re. So this pir gives them blessing on the halfway only. So that is the speciality on this song. The pir being a Muslim, he gives the blessing to all Hindu people who are coming over here on the halfway only. So that is how he is welcoming them on halfway only. Pira Betla Ardya Vateri, and that is how this Shigmo is concluded.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للذين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. फरमा और इनमें से जो हज़रात परेशान हाल है उनको परेशानी अता फरमा, जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, जो बेरोज़गार है उन्हें रोज़गारी अता फरमा। धर्म के अनुसार यहाँ पर या अल्लाह पर या परवरदिगार यहाँ पर आने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फरमा और या अल्लाह या परवरदिगार बिलख़ुसूस हमें आपस में मिल करके रहने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फरमा और या अल्लाह या परवरदिगार हमारे दरमियान इत्तेहाद अता फरमा और या अल्लाह या परवरदिगार बिलख़ुसूस
इनकी ज़िंदगियों में अगर किसी तरह की परेशानी तकलीफ़ें हैं तो तमाम तकलीफ़ों परेशानी को दूर अता फरमा। या परवरदिगार इन तमामों के कारोबार धंधा पानी सही तरीके से चलने की तौफीक अता फरमा और इनके कारोबार में दीन दूनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला फी शानिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। होली जाऊं आनी सगळ्यांक एक वेलकम दिता आनी मुबारकबाद बी दिता। आयचो म्हणजे दीस म्हणजे सगळें कितें सांगपाची गरज ना। आमी आयच्या दिसाक आमी कितें करता एका मोठ्या आतुरतेन आमी भाव आमकां मेळटले म्हणून आमी तेजी वाट पळयत आसता। कित्याक आयच्या दिसा आमी सगळे एकमेक मेळटा एकमेकाक मिठी मारता गळे मेळटा सगळे आमचें चालू आसता। आनी आमचे हो प्रोग्राम जो आसा न्हू आनी हे लोक जे आमकां येवन मेळटा न्हू आमचे भाव आमी ताका भावच म्हणटा ते प्रत्येक वर्सा अशें येवपाचें आनी फुडें सुद्दां अशेंच तेंच्यांनी येवन आमकां मेळचें म्हणून अशें आमी पिरा कडेन आनी सिद्धेश्वर देव आहा न्हू आमचो तेचे कडेन मागता। आमचे असोच प्रोग्राम चालू आसचो आनी आमच्या वर्सान वर्सा अशें चालू आसचें। चला जाऊं पीरा बेटे पीर भेटला हेजो अर्थ कितें जाणा तूं? पीर जो आसा न्हू पीर आपले जे भक्त येता न्हू ताका मेळपाक लागून तो हांगा येसर वाट पळयना। खास तो तांकां मेळपाक अर्दे वाटेकूच वयता आनी तांकां घेवन येता तेंचो वेलकम करून म्हणून ते चला जाऊं पीरा बेटे पीर भेटला म्हणजे मेन म्हणजे पीर सुद्दां कितले प्रेम करता आपल्या भक्ताचेर हेजेर सिद्ध जाता। आनी अशें आमचो हो प्रोग्राम असोच जावचो प्रत्येक वर्सा असोच जावचो आनी हे तुमी सगळे येवन भाव आमकां मेळचे म्हणून आमची इच्छा आनी कांय ना। Pira Betla अर्द्या वाटेर and that is how this Sigmo is concluded. Be here next year for the Sigmo festival. Thanks for watching.